Audible? Yes, good afternoon. Thank you, ma'am. Thank you so much. Good afternoon. Mitali ma'am is already joined. 2 minutes. Yes, welcome to all of you. I'm just waiting, Mitali ma'am. Shall we start or shall wait for 2 minutes? Good afternoon, all of you. On behalf of Aryavarta Sahodev School Complex, I welcome all of you in this wonderful session. So we know that today with us, none other than the most beloved and you can say the versatile trainer, none other than Mithali ma'am with us. And today she's training us on the implications of NEP on classroom teachings. Mithali ma'am. Yes, ma'am. We welcome you on this training sessions on behalf of the entire participants. Once again, welcome you this. And I welcome all the participants, all the principals, and my mentor, our founder, chairman, Dr. C.B. Singh sir, also in this wonderful training session. And everybody eagerly waiting for your session, ma'am, including me. Thank you very much. Thank you so much, ma'am. And we Thank you know so that each much. one of us know that the take home is will be wonderful things. And in NEP, it is. Hopefully, ma'am. Thank you so much. Thank you. Ma'am, first of all, I would like to say that thank you so much for the honor. Thank you, Aryavat Sahodia, for inviting me to this workshop webinar. Now, but there's one thing that I would like to clearly tell you that in the beginning itself, that the topic that we have selected is a very wide topic. Okay, it's not possible that we cover up this topic in 1 hour. In fact, the thought process itself is not proper. But I would say that it's not possible for us to cover this topic even in a day's workshop or 2 days workshop. See, I will only give you the guidelines, okay, how you can move about it. And then you have to do a little bit of study and you have to read out so that you understand that what actually NEP says and what are the linking documents. So you can take this training program as a guideline. And if time permits us further, if I get the opportunity, maybe I'll put up a request to Aravat Sahodia that we get a time where we can discuss in details. So to begin with, I'm Mitali Mukherjee, Principal Indrapuram Public School Girls, and I am here to discuss about NEP today with all of you. And basically NEP we all know, but what is the effect of NEP into our classroom transactions? Is NEP a document only, or NEP has brought about a change in our day-to-day classroom teaching? Or rather, if your day-to-day teaching has not changed, then I must say that now it's high time that you understand that what NEP wants, and accordingly you have to bring about the change in your classroom transaction as well. Somebody is complaining in the chat box that I'm not audible. So is it so? Am I not audible? Ma'am, you are audible. Only that it's a request to all the participants. Check from your end that whether your network is okay or not. Please check it. She's absolutely audible. Ma'am, you can carry on. Thank you, ma'am. So, dear teachers and principals, if any, if you've joined the workshop, then let us first try to understand in very short, that what basically our NEP says. What is NEP? Now, as we all know, that India got its first education policy in the year 1968. And many maths teachers must be out there. I'm very poor in maths, let me tell you, that we became independent in the year 1947. And just imagine how many years it took to come to our first education policy, which was in the year 1968. And, as per the rule says that after every 10 years,
you must have a new education policy. I mean, education policy should be revisited and something new should be added to it. Old things must be deleted. But unfortunately, after 1968, we got the next policy in the year 1986. So you can very well imagine how active our then that time governments were to give us the policies and how serious they were about education. I hope you can understand this. And then finally in 2020, we got the third education policy of India. Now, when I say I have not gone through, to be very frank, 1968 policy I have not gone through, 86 I have gone through a little bit, but NEP 2020, where all of us are going through it. So I would say that this is perhaps the first education policy of India which advocates, which works on the guidelines of Indian heritage and culture. You know, in many places in the NEP, you will find that it talks about the Indian ethos, the Indian culture, the Indian day-to-day education things which are happening. There are so many games around us. There are so many methods around us, so many processes around us, so many systems around us which we are following, but they were never picked up from the society and put up in an education policy. But this is perhaps the first policy which talks so much about being an Indian. So that is the proudest part of this policy. Now, after these policies, today we are into 2020 and just try to understand what is the new education policy. Now, the new education policy says that it is inclusive, it is participatory, and it is holistic. You have to understand the meaning of these three words. They're very important words. You know, they are the pillars of our education policy. When we say inclusive, we mean that new education policy says कि देखो भैया कोई भी छूटना नहीं चाहिए, कोई भी नहीं छूटना चाहिए, चाहे वो स्वस्थ हो पूरी तरीके से शारीरिक रूप से या नहीं हो, मानसिक रूप से या नहीं हो, उसके शरीर में कोई प्रॉब्लम है या उसकी उम्र का कोई मतलब प्रॉब्लम है कि भैया इस उम्र में हम नहीं ले सकते, इस उम्र के बाद हम नहीं ले सकते, या दैट चाइल्ड बिलोंग्स टू सम स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी जिसको हम नहीं पढ़ा सकते, whether it's a female or a male or a scheduled caste, scheduled tribe, general, tribal, whatever you can think of under the sun. Everybody is a part of the national education policy. So, you know, national education policy says we'll not exclude anybody. Everybody has to be a part of the education policy at some level or the other. कोई higher में है, कोई you know early childhood का है, कोई maybe 6 to 8 का बच्चा है, कोई 10 to 12 का बच्चा है, लेकिन participate सब लोग करेंगे. Next is education policy highly advocates कि you are not going to teach. That means, you know, like what I am doing right now. I am speaking, but you people are not getting a chance to interact. सो ये बिल्कुल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एकदम ग्राउंड लेवल पे नो 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 है. दैट मीन्स इट्स अ पार्टिसिपेटरी क्लास. Means I also speak as a teacher and you also speak as a student. We both together take the class ahead, whether through interactions or through activities or through discussions or through playway method or whatever it is. But you know, the teacher and the mentor and the mentee both have to participate in the discussion. And the final and this word is holistic. Means holistic means, you know, for example, Mitali Mukherjee can speak very well, but Mitali Mukherjee cannot even dance, take a single step of dance. Mitali Mukherjee cannot even sing a single line. Mitali Mukherjee cannot write a single line properly. नहीं, ऐसा नहीं है. ठीक है, if I am good in something, extraordinarily good in something, very good, promote it. But at least आपको बच्चे को उस लेवल तक पहुंचाना है जहां पे आपका बच्चा हर कुछ थोड़ा 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 कर सके. क्योंकि आप ये समझिए कि जब आप अपने बच्चे को 15 साल के बाद 15, यू अंडरस्टैंड व्हाई आई एम सेइंग 5 + 3 + 3 + 4 एज पर द एनईपी. सो 15 साल के बाद जब आपका बच्चा समाज में जाएगा तो सिर्फ बोलकर ही तो नहीं उसका सब काम होगा. उसे खाना भी बनाना पड़ेगा थोड़ा बहुत, उसे पढ़ना भी पड़ेगा, उसे लिखना भी पड़ेगा, उसे चलना भी पड़ेगा, उसे बोलना भी पड़ेगा. सो यू नो द होलिस्टिक ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. और बहुत पुरानी बात है, यू नो गांधी जी सजेस्टेड द 3 H, the hand, the head and the heart.
Again, the 3H approach, which is again holistic education, vocational education, उस पर बहुत ज़्यादा emphasis है in the new education policy. Okay. And the next very important thing is you have to understand that the new education policy is a paradigm shift from rote learning to competency building. We'll come to competency building in the later part of this session. You know, I have decided to discuss a little bit, come out of NEP and discuss. So this is one very important thing. The next thing is, friends, that you have to understand that no child should be left behind. We are following a 5+3+3+4 found stage education. 5 means nursery, junior KG, senior KG, 1 and 2, which is known as the foundation stage. Then 3, 4, 5 is known as a preparatory stage. And 6, 7, 8 is known as a middle stage. And 8, 9, 10, 11, 12 together is known as a secondary stage. So, you know, as per the nomenclature is concerned, you should not say senior secondary now. With the coming of NEP, everything is secondary. And every school, the 10thers are supposed to go to their own school, 11th and 12th, ideally. Okay. Then we have the emphasis of mother tongue, that is multilingualism up to class 5. Then we have vocational training for classes 6 to 10. At least 10 days of vocational training is advocated in the NEP. You can always have more than that. Then you have a four years B.Ed degree and etc. So this is all about NEP, which you should be knowing as a teacher, that these are the new things which have come up as per the NEP. Now the next is very important that you should understand. You know, many people question this, that ma'am, will we have class 10th exams? Will we have class 12th exams? ऐसा कहीं भी NEP NCF आपसे नहीं कहता है you will not have class 10 exams. But of course NEP says that you will not have exams up to class 2. There is no formal assessment up to class 2. And you can start assessment process after class 2. And as far as class 10th is concerned, maybe there will be not one board exam, which we take at the end of the session. Maybe there will be multiple exams just to give the child ease, just to make the child relax through the session, and just to make the child free from examination fear. And then you have class 12 exams will stay as it is, but maybe there will be some redesigning and restructuring. But there is no question that exams will be scraped off. But of course, in class 8 and all, exams are not there for choosing of streams, if it is happening in some part of the country still. Madam Anita Yadav ji, please stop requesting for annotation. Madam Anita Yadav ji, please stop requesting for annotation. I cannot allow that. Okay, now let's come to the next thing. Ma'am, I think your some key has been pressed. Anita Yadav ji, please take care of that. Take care of that. Okay. Now, then I keep declining her or I go ahead. Okay, then most important is the multidisciplinary approach. And as you all know, like, you know, it must have happened with someone or the other from this group itself. Like it happened with me also, that when I was into higher education and I was doing something in between, I got married, I was having kids. So what happened is I had to break my education. Now again, if I want to do that degree, maybe after 5 years or 10 years, I have to start from scratch. But now the NEP says that academic credit will be given. Suppose I'm doing MEd, or suppose I'm doing a master's and I complete 1 year and I drop. So after 5 years, if I want to again do my master's, I have to do only the remaining 1 year. I have not to do both the years. Okay. So this is something very, very important that is known as academic bank of credit. Okay. Now, this is one thing. Now let's come to the next slide, which says that by 2022, this is something very important, teachers, expert organizations like NCRT, SCRT will set up NPST. So this is for you teachers. You have to grill yourself. You have to groom yourself. You have to prepare yourself that you are ready for this common national professional standards for teachers. So, you know, like some of you must be having the exposure of DAV and all. They keep on taking the test of teachers every year. So maybe now this will become something very common. Every teacher CTET is there, but CTET is only once now. After you pass CTET, you're all okay. You're all set. You don't worry. But now what will happen is maybe teachers have to give a test every year, something like that. So there are certain expectations which NEP has from teachers. And that is the reason why so many trainings are being done. You cannot be that old teacher with a chalk in your hand and a board
and a blackboard or a green board. That is not the figure or the image of a teacher anymore. Now the teacher is a very, very dynamic person. The teacher has a big role to play in the child's life. So NPST will keep on setting standards for us, and we have to keep on passing those standards. So teachers, I think you should be aware of that, and you should be ready for that also. That's very, very important. Now let us talk about certain things that are expected from students and teachers. Like, for example, NEP advocates that in the foundation years, FLN has been made compulsory. That means foundation literacy and numeracy. ना अभी अगर आप क्लास में जाते हो तो आप बच्चे को जो इच्छा होती है आप पढ़ाते हो, आपके स्कूल का एक करिकुलम होगा, आप उसको फॉलो करते हो. लेकिन now I'm gradually shifting to the expectations of NEP and how your classroom transaction will change as per NEP. Now NEP says कि no, we are giving you a foundation literacy and numeracy standard, basic standard. आपको अपने बच्चे को मिनिमम उस स्टैंडर्ड तक पहुंचाना है. जैसे यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द वर्ड लर्निंग आउटकम्स. तो अब मैं एक नया वर्ड आपको दे रही हूँ, हो सकता है आपने सुना भी हो, मिनिमम लर्निंग आउटकम. लर्निंग आउटकम का मतलब क्या है कि भैया मेरे क्लास के सारे बच्चों को इतनी चीज आती है, लेकिन आपके क्लास का आपके हिसाब से, आई एम यूजिंग अ रॉन्ग वर्ड हियर, क्योंकि आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि आपके हिसाब से आपके क्लास का जो सबसे कमजोर बच्चा है, अकॉर्डिंग टू यू, क्या उस बच्चे ने वो लर्निंग आउटकम अचीव किया? हैज द चाइल्ड अचीव दैट लर्निंग आउटकम? Maybe no. So you will say, no, ma'am, 90% have achieved, only 10% have not achieved. So why that 10% is not achieved? Even the 10% has to achieve it. Just इसी को हम लोग कहते हैं minimum learning outcome. यानी ये चीज अगर हम A to D पढ़ा रहे हैं तो मिनिमम मेरे सारे बच्चों को B तक आता है. कुछ बच्चों को CD आता है, उन लोगों को कुछ बच्चों को नहीं आता, ये आप कह सकते हैं. लेकिन your MLO will be A and B and your learning outcome will be A, B, C, D. Are you understanding the difference now? So NEP has given you a basic syllabus for foundation literacy and numeracy, and it expects that that must be followed in all the schools in the foundational years, that is up to class 3. So you have to fulfill it. Okay, that is a mandate. Now let us come to the next thing, which is very, very important, progress in digital learning. जितने भी टीचर्स आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इफ एनी वन ऑफ यू थिंक कि डिजिटल लर्निंग इज नॉट माई कप ऑफ टी, मेरे स्कूल के बच्चे तो कंप्यूटर नहीं समझते हैं, मेरे स्कूल के में सारे बच्चे के पास एंड्रॉयड फोन नहीं है, तो मेरे स्कूल में डिजिटल लर्निंग नहीं हो सकता, तो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग. You just wait for the next 2 to 3 years of time when NEP will be in full swing in the country. Then I think the next step of the government will be digitalization. Digitalization will happen on a rapid scale, and you have to be a part of that program. You have to be a part of that process. Now, online education standalone will not be enough. So what will happen is very soon the education industry will go into hybrid mode where certain things will be online and certain things will be offline. ना आपको सिंपल सा एक सवाल करती हूँ, आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, अगर आपके प्रिंसिपल आपसे पूछे कि आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, बताओ तो बच्चा नंबर ये जो है, ये निहारिका सिंह है या वो कर्तव्य कुमार है, ये बच्चा जो है किस किस स्किल को अचीव कर चुका है, किस किस को नहीं अचीव किया है, आप बता सकते हो? आप 2 मिनट के लिए सोच में पड़ जाओगे कि मैम मुझसे क्या पूछ रहे हैं, मेरे प्रिंसिपल सर मुझसे क्या पूछ रहे हैं, ये कौन सा स्किल है, अब मैं कैसे बताऊं उसने ये स्किल अचीव किया कि नहीं. उसके लिए तो मुझे अलग से उसका टेस्ट लेना पड़ेगा. टेस्ट लेने के बाद मुझे उसका रिजल्ट देखना पड़ेगा. रिजल्ट देखने के बाद मुझे पता करना होगा उसने वो स्किल अचीव किया या नहीं, वो कॉम्पिटेंसी अचीव किया या नहीं. तो इसी यहीं पे डिजिटल लर्निंग कम्स इनटू योर रेस्क्यू. तो टीचर्स, आप डिजिटल लर्निंग के साथ एक दोस्ती कर लीजिए, क्योंकि डिजिटल लर्निंग आपका हेल्प करेगा. उसमें आपके इनबिल्ट मॉड्यूल्स होते हैं, और उस मॉड्यूल का जब नंबर आपके सामने आएगा तो यू विल हैव अ रेडीमेड आंसर टू दीज क्वेश्चंस. यू विल नो दैट किस बच्चे में हीमोग्लोबिन की कमी है, किस बच्चे में कैल्शियम की कमी है, किस बच्चे में विटामिन डी की कमी है. अभी आपको पता करना बहुत मुश्किल है मैनुअली, बट इफ इट हैपेंस डिजिटली, थ्रू सिंपल ऑलरेडी डिजिटली डेवलप्ड टेस्ट, you can easily find out that my this child is lacking here and my this child is very good here, my this child is lacking here, my the third child is lacking there, and you will be able to prepare, tailor, revisit, redesign your lesson plans according to the requirements of the children in your class.
अभी क्या हो रहा है, we are all doing the same thing. When we go to the class, we follow one lesson plan for all 40 students, but we have to understand that 40 children are different, so we cannot have the same lesson plan for the 40 students. So this is what NEP actually says. Okay, are you getting my point? Now, next is teachers, which is very, very important. In NEP, NEP says give the child a real world experience. Now, what is a real world? हमारा world है क्या? हमारा world surrounded है by objects, by music, by dance, by art, by theater, by so many types of things around us. So, suppose when you're teaching in the class, please try to give the child the exposure of those things. Like, for example, I'm giving an example. अगर मैं क्लास में बच्चे को पढ़ा रही हूँ about shapes, about colors, आपने बच्चे को रेड कलर दिखा दिया, बता दिया रेड है, लेकिन इसके बाद गिव द चाइल्ड एन एक्सपोजर. Take the child outside your classroom, maybe, or maybe inside your classroom itself. How many things are read in the class? Let the child see, make the use of his or her sense organs and try to understand that what is red color, where is it used, इसका effect क्या होता है, ये कैसा लगता है दिखने में, etc., etc., etc. Are you understanding what I'm trying to say? So real world experience is something very important, and it has been very importantly centeredly placed also in the NEP. So only teaching the child theoretical things will not be enough now. Next is innovative pedagogy. With the NEP in place, you must understand कि NEP आने से मेरी entire teaching methodology, मेरी entire teaching cycle change हो रही है. अब आप क्लास में जाओगे और एक टॉपिक पढ़ा दोगे, क्वेश्चन आंसर्स करा देंगे, डिक्टेशन दे देंगे, तो ये इनफ नहीं है. नाउ अगर आप NEP को समझते हैं, अगर आप NEP को इन द प्लेस फॉल सही जगह पे लाना चाहते हैं, उसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो एज अ टीचर यू हैव टू डिवाइज न्यू पेडागोजीज, यू हैव टू कम अप विथ न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक इंग्लिश टीचर हैं तो मे बी यू हैव टू कम अप विथ डिबेट्स, यू हैव टू कम अप विथ ग्रुप डिस्कशंस. If you are a science teacher, maybe you can go for experiential learning, you can go for inductive method, deductive methods, demonstration methods, experimental methods. If you are interested in making the children understand the nitty-gritties of NEP, go deep dive into NEP, and if you want to teach the child, then as a teacher also, you should have the knowledge of innovative pedagogies. अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जिनको अपने सब्जेक्ट की पेडागोजी की आइडिया नहीं है, तो अभी मैं आपको सिर्फ एक हिंट दे रही हूँ कि अभी आपका काम है कि आप गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, और आपका जो भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड कुछ पेडागोजीज के बारे में जाने. अगर आप जानेंगे ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल बहुत सिंपल सी बात है, अगर हम जानेंगे नहीं कि पनीर चिली कोई डिश होता है, तो क्या आप रेस्टोरेंट में जाकर ऑर्डर करेंगे पनीर चिली? आप जानेंगे तभी तो आप ऑर्डर करते हैं. बहुत समय हम नहीं भी जानते हैं तो हम क्या करते हैं ना, पनीर चिली खाकर देखते हैं कैसा होता है. सिमिलरली माय डियर टीचर्स, अगर आप पेडागोजी की नॉलेज ही नहीं रखेंगे, अगर आप ये जानेंगे कि नहीं भाई मेरे सब्जेक्ट को मैं कैसे और इम्प्रूव वे में पढ़ा सकता हूँ या पढ़ा सकती हूँ, तो अब आप कभी इनोवेटिव पेडागोजी ट्राई ही नहीं करेंगे. सो NEP स्ट्रांगली एडवोकेट करता है, स्ट्रांगली रिकमेंड करता है कि टीचर्स इनोवेटिव पेडागोजीज यूज करें, चॉक एंड टॉक की दुनिया से बाहर आए. फिर what is the next focus of NEP? That you have to make the children ready for the 21st century skills. I've already told you, you have to focus on skill improvement, competency development, and take the academic and the non-academic pursuit side by side. आपको पता है ना कि NEP ये कहता है कि co-curricular अब कुछ है ही नहीं, सब करिकुलर है. चाहे आप बच्चे को डांस करा रहे हो, गाना गवा रहे हो, PT करा रहे हो, थिएटर करा रहे हो, या इंग्लिश पढ़ा रहे हो या मैथ्स पढ़ा रहे हो, दे आर ऑल करिकुलर. देयर इज नो डिमार्केशन नाउ, को करिकुलर एंड करिकुलर. तो इन दोनों को आपको हैंड इन हैंड ले जाना होगा और बच्चे को इसमें अच्छा करना होगा. ओके, नाउ this is about NEP, and of course this all of you must be knowing, especially for the senior classes, that there is no bifurcation of art and science, there's no bifurcation as curricular, extracurricular, and there is no bifurcation between vocational and academic streams. Everything, all this will go hand in hand. अगर आपके स्कूल में vocational training हो रही है किसी भी चीज की, तो उसके साथ ही साथ academics भी चलेगा. ऐसा नहीं कि आप बच्चे को सैटरडे को बुला लें only for vocational और बाकी दिन आप रखते हैं academic. ऐसी लाइंस नहीं खींचे प्लीज अपने स्कूल में. अपने स्कूल में सही नोमेनक्लेचर को यूज करें. आप अपने स्कूल का जब टाइम टेबल बनाते हैं तो सही वर्ड्स का यूज करें, और everything is on the same platform now.
अभी तक हम लोग ये समझते थे कि भैया मैथ्स का बहुत बोलबाला है, मैथ्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, whereas Hindi is not, whereas science, whereas dance is not. Now the scenario is different. All subjects are equally important. Now let us try to understand कि NEP तो एक document है. NEP is a document which you read and you understand. लेकिन what translates NEP into action? NEP जब क्लासरूम में जाती है तो वो NEP नहीं रहती. NEP को एक्शन में लाने वाले डॉक्यूमेंट को हम लोग कहते हैं NCF. You have to understand that what is a NCF. Actually, NCF is one of the key components of NEP 2020 that enables and energizes the transformation informed by the aims, principles, and approaches of NEP. So, what is NCF? Okay, 4 स्टेज में NCF है. जैसे चार स्टेज में आपके NEP को डिवाइड किया गया ना, 5+3+3+4, वैसे ही आपके पास 4 NCF है. पहला NCF है NCF फाउंडेशनल स्टेज, यानी ये बच्चों LKG, UKG, नर्सरी 1 और 2 के लिए. दूसरा NCF है NCF मिडिल स्कूल, विच इज फॉर स्टूडेंट्स ऑफ 3 to 5. तीसरा NCF है NCF प्राइमरी, NCF प्राइमरी पहले आएगा 3 to 5, NCF मिडिल 6 to 8, एंड इसके बाद आपका आएगा NCF फॉर सेकेंडरी स्कूल्स, मतलब 9, 10, 11, 12. तो NEP इज अ डॉक्यूमेंट. उस डॉक्यूमेंट को क्लासरूम में जब हम ट्रांजैक्ट करते हैं, उस डॉक्यूमेंट को जब हम क्लासरूम तक ले जाना चाहेंगे, देन दोनों क्लासरूम और NEP के बीच का लिंक है कौन? NCF. तो अभी ऑलरेडी द गवर्नमेंट इज रिलीज्ड NCF-FS. आप NCF-FS को पढ़ें और उसको समझें, और एवरीथिंग इज गिवन इन डिटेल. मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रही हूं कि व्हाट इज द बेसिक ethos ऑफ द NCF. ओके, Manoj Kumar ji, please don't request for annotation. Manoj Kumar ji, please don't request for annotation. Are you understanding what I'm trying to say? अभी आपको NCF वर्ड समझ में आया? तो NEP एक डॉक्यूमेंट है, उसमें बेसिक की प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, लेकिन उन प्रिंसिपल्स को क्लासरूम में ले जाकर ट्रांजैक्ट करने के लिए यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ NCF, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क. NEP पॉलिसी है, लेकिन आपका करिकुलम क्या है? What is your curriculum? How many subjects you have? How do you teach? What are your pedagogies? How many periods you have given? Which are the classes which are following this? ये सब आपका क्या है? This is your curricular document. So what is the curriculum framework that has been given in a broad way in the documents which are known as the NCF? तो अभी आपको मैं ब्रीफ में समझाती हूँ कि what is actually what the NCFs talk about. कोई भी NCF आप उठाओ, चाहे वो प्राइमरी स्टेज का हो, मिडिल स्टेज का हो, सेकेंडरी स्कूल स्टेज का हो या फाउंडेशन स्टेज का हो. NCF says what is the aim of education. सबसे पहले अगर मैं आपसे आज पूछूं what is the aim of education, आपका क्या जवाब होगा फ्रेंड्स? कैन यू प्लीज चैट इन द चैट बॉक्स what is the aim of education? Any one of you, please, I'm expecting for some answers. What is the aim of education? What is a broad aim of education? Can anyone please give me in the chat box? What is the aim of education? Please tell me. I'm not getting any responses in the chat box. What is the aim of education? Nobody is giving. Nobody has answers. बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं आप? Overall development of the child to sustain the competitive world. Very good. Very good, sir. Anyone else? Anyone else? Holistic development, good citizenship. Very good. Very good. Thank you for your beautiful answers. Thank you, friends, for your answers. I am sure that some of you must be giving more answers. Okay. Now, किसी भी NCF में NCF clearly says aim of education, whatever is the aim of education, holistic development, all-round development. In fact, if you ask me, my definition for aim of education would be that the basic aim of education is to prepare a good human being. If you are a good human being, you will do wonders for yourself, for your family, for your country, and for the globe. अगर आप बहुत होलिस्टिकली डेवलप्ड, आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं, आप बहुत अच्छा डांस करते हैं, आप बहुत अच्छे एकेडमिशियन हैं, आप बहुत अच्छे इंजीनियर हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, सब कुछ है आपके पास, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप उस सारी नॉलेज का इस्तेमाल
बॉम्ब्स बनाने के लिए करते हैं, राइफल बनाने के लिए करते हैं, AK-47 बनाने के लिए करते हैं। ये तो मैंने कुछ नाम मुझे याद है, हो सकता है और नए नए नाम हो। तो क्या यही एजुकेशन का एम है? क्या आप इतने डेवलप्ड हो गए हैं कि आप सारी डिस्ट्रक्टिव चीजें बना सकते हैं? आप अपने पड़ोसी को गोली से उड़ा सकते हैं, आप किसी को जेल भेज दे सकते हैं विदाउट एनी रीजंस, आप किसी को 4 थप्पड़ मार दे सकते हैं। क्या ये एम ऑफ एजुकेशन? तो सबसे पहले इस बात को समझिए कि एनईपी और सारे एनसीएफ जितने भी हैं, दे ऑल एडवोकेट टुवर्ड्स प्रिपरेशन ऑफ गुड ह्यूमन बीइंग्स। ओके, ना कुछ कुछ भी आपका स्कूल का एम ऑफ एजुकेशन हो, ठीक है, उस एम ऑफ एजुकेशन को आप कैसे फुलफिल करोगे, इस ब्रेकअप को बहुत अच्छे से समझिए, बिकॉज दिस इज द एसेंस ऑफ एनसीएफ। एनसीएफ कहता है कि एम ऑफ एजुकेशन इज फुलफिल थ्रू करिकुलर गोल्स। जो भी आपका करिकुलम है उसके कुछ गोल्स होंगे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका एक करिकुलम गोल है, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल विल बी वेरी गुड ओरेटर्स। ये आपका करिकुलर गोल है। इस गोल को आप कैसे अचीव करोगे? इस गोल को अचीव करने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में आपको काम करना पड़ेगा। ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, दे आर नोन एज कॉम्पिटेंसीज। और वो कॉम्पिटेंसीज, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि आपके स्कूल का करिकुलम गोल है कि आपके सारे बच्चे विल बी वेरी गुड ओरेटर्स। तो इसकी कॉम्पिटेंसी क्या होगी? They will be able to recite good poems, be able to do good public speaking, they will be good debaters, they will be good speakers, whatever, they will be good narrators, they will do good comparing, whatever, commentary, whatever. ये सारा गुण होता है एक ओरेटर में। तो क्या आपको लगता है कि ये जितनी कॉम्पिटेंसीज हैं ये एक ही दिन में अचीव हो जाएंगे? इज इट पॉसिबल कि एक दिन अचीव हो जाए? ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप बच्चे को रेसिटेशन में अच्छा करना चाहें तो यू विल नीड मे बी 5, 10, 6, 20 days, आई डोंट नो, मे बी यू विल नीड years, it depends. So how will you achieve your competencies? Through learning outcomes. Now what are learning outcomes? Learning outcome is that result of my 35 to 40 minutes class. जैसे फॉर एग्जाम्पल आज का एक घंटे का सेशन हो रहा है, उसका लर्निंग आउटकम क्या है? उसका लर्निंग आउटकम ये है कि जितने भी इसके पार्टिसिपेंट्स, उनको ये समझ में आना चाहिए कि एनईपी एक डॉक्यूमेंट है, एनईपी को क्लासरूम तक ले जाना है तो थ्रू एनसीएफ ले जाना है। और एनसीएफ क्या कहता है? एनसीएफ ये 4 बातें कहता है, दैट एम ऑफ एजुकेशन कैन बी अचीव थ्रू करिकुलम गोल्स कैन बी अचीव थ्रू कॉम्पिटेंसीज, एंड कॉम्पिटेंसीज कैन बी अचीव थ्रू लर्निंग आउटकम्स। तो सबसे सबसे जो छोटा यूनिट है, सेल जिसको हम लोग कहते हैं, इज लर्निंग आउटकम। बहुत सारा लर्निंग आउटकम मिलकर एक कॉम्पिटेंसी बनता है, बहुत सारी कॉम्पिटेंसीज मिलकर एक करिकुलर गोल बनती है, और बहुत सारा करिकुलर गोल जब अचीव हो जाता है तो हमारा एम ऑफ एजुकेशन अचीव होता है। यही बेसिकली एनसीएफ कहता है। और एनसीएफ क्या है? एनईपी का ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट। Are you understanding? So I think you followed this, that what is the meaning of education, what is the aim of education. Okay, now friends, you have to understand this. Let me go to the next slide. How does NEP affect my student's life? How does it affect the student's life? So सबसे पहली बात ये है कि very broadly NEP says, which the entire ecosystem should understand, that there are no internal exams up to class 2. There are semester systems will be introduced even in class 12, and class 8 में बोर्ड एग्जाम्स देने की जरूरत नहीं है, आप 10th में ही दोगे। और बोर्ड एग्जाम का शायद रीस्ट्रक्चरिंग किया जाएगा, बोर्ड एग्जाम स्क्रैप ऑफ हो जाएंगे, ये मैं आपको इस समय नहीं कह सकती, ऐसा कोई सर्कुलर नहीं है, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स रीस्ट्रक्चर जरूर होंगे इन फ्यूचर। नेक्स्ट, एनईपी promotes holistic learning, multidisciplinary curriculum. होलिस्टिक लर्निंग कैसे होगी? एक बच्चे की होलिस्टिक लर्निंग होगी कैसे? तो होलिस्टिक लर्निंग के लिए इफ यू गो थ्रू द एनसीएफ FS says that holistic learning means physical development, social and economical and ethical development, cognitive development, aesthetic and cultural development, and positive learning habits. अब आप 1 मिनट के लिए सिर्फ इस स्लाइड को देखिए माय डियर फ्रेंड्स, और आप सोचिए इसमें से एक भी हम लोग करते हैं क्या क्लास में? हम जब क्लास में जाते हैं तो हमारा क्या एम होता है? आज मुझे ये पोएम कंप्लीट कर देना है, आज मुझे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कंप्लीट करना है, आज मुझे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कंप्लीट करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन
क्या कोई टीचर, आप लोगों में से कोई भी टीचर, आप हाथ उठाइए, क्या कोई टीचर जाता है क्लास में और कहता है कि आज मुझे अपने बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट पे काम करना है? हो सकता है आप में से बहुत लोग कहेंगे मैम ये तो पीएचडी टीचर का काम है, ये मेरा काम नहीं है। क्या आप में से कोई भी टीचर क्लास में जाकर कहता है कि आज मैं हेल्प करूंगी अपने बच्चे की एथिकल एंड सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट कराने में, आज मैं अपने बच्चे को पॉजिटिव लर्निंग हैबिट सिखाऊंगा? आलोक जी थैंक यू सो मच, वन यस आई एम गेटिंग हियर, थैंक यू सो मच। सो यू टीच, मैं ये नहीं कहती कि आप क्लास में जाकर सिर्फ एस्थेटिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट पे ही फोकस करें, नो आपको जो पढ़ाना पढ़ा, पॉलिनोमियल पढ़ाना चाहते हो, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाना चाहते हो, रिफ्रैक्शन पढ़ाना चाहते हो, रिफ्लेक्शन पढ़ाना चाहते हो, जो पढ़ाना हो पढ़ाओ। लेकिन आपको ये समझना होगा कि रिफ्लेक्शन पढ़ना एम ऑफ एजुकेशन नहीं है। एम ऑफ एजुकेशन ये है कि जो बच्चा 15 साल के बाद सोसाइटी में जाएगा, वो स्कूल 15 साल के बाद सोसाइटी को एक बच्चा जो देगा, दैट चाइल्ड शुड बी फिजिकली डेवलप्ड, that child should have social, emotional, and ethical development. That child's cognition should be developed. That child's aesthetic and culturally, that child should be developed, and that child should have positive learning habits. There are so many teachers in so many schools who don't want to do something new. आप कुछ नया करने को कहें वो मुंह बनाएंगे, they will not want to do it, they leave the school if the principal or the management is asking them to explore and learn something new and do something new. So what is happening? That means the teacher के अंदर positive learning habit develop नहीं है. The principles, so many of us quit because we are not ready to change ourselves with the time. You remember जब computers introduce हुआ था तो कितना बड़ा revolution हुआ था, कंप्यूटर आ जाएगा तो नौकरी चली जाएगी, मैन पावर घट जाएगा, लोग बेरोजगार हो जाएंगे. नेगेटिव माइंडसेट होता है हमारा चेंज की तरफ. So you have to develop positive learning habits because learning happens till the end of life. It's not only those 15 years when the child is in school. So you have to inculcate that habit in the child, that when the child is outside the school also, when the child is on the deathbed also, the child is learning something. Getting my point? So this is how your classroom transaction will change. Now कल जब आप क्लास में जाओगे तो थोड़ी सी मेरी कोई भी बात को याद रखना और सोचना कि जब हम पढ़ा रहे, मान लीजिए बच्चे को मैं पढ़ा रही हूँ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ाते पढ़ाते क्या मैं बच्चों का थोड़ा सा कल्चरली डेवलप कर सकती हूँ? कैन आई लिंक रिएक्शन टाइप्स एंड कल्चर? कैन आई लिंक लर्निंग हैबिट्स विद माय रिएक्शन टाइप्स? कैन आई डू दिस एज अ टीचर? कैन आई? अगर आपने ऐसा किया, इसका मतलब ये हुआ कि आपने एनईपी को फॉलो किया, आपने एनसीएफ को फॉलो किया, आपने अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी में चेंज किया बिकॉज ऑफ एनईपी एंड एनसीएफ in line. Now, next is, for example, this I'm talking about the foundational stage once again. If you go through the NCF, it says that children should be made to learn through play. अभी प्ले भी बहुत तरीके का होता है, फ्री प्ले, गाइडेड प्ले, स्ट्रक्चर्ड प्ले. ये आप पढ़ेंगे और ज्यादा पढ़ सकते हैं when you go through the NCF. I'm just giving you the guidelines. I'm just triggering these words in front of you so that you can go back and जो चीज आप में से जितने फाउंडेशनल स्टेज के टीचर्स यहाँ हैं, आप जाकर इसको पढ़िए. जो मिडिल स्कूल के हैं वो मिडिल स्कूल वाला पढ़ लीजिए, जो सीनियर स्कूल के हैं वो सीनियर वाला पढ़ लीजिए. बट आई एम जस्ट गिविंग यू द वर्ड्स, रेस्ट डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू पुट इट अप. नेक्स्ट, NCF very strongly advocates significance of family and community because man is a social animal. आप उसको बहुत बड़ी इंजीनियर बना दीजिए, लेकिन उसको यही नहीं पता कि लोगों के साथ बात कैसे की जाती है, उसको यही नहीं पता कि फैमिली में रहा कैसे जाता है, गुरुजनों का रिस्पेक्ट कैसे किया जाता है. डू यू थिंक दैट चाइल्ड विल बी हैप्पी इन लाइफ? डू यू थिंक दैट चाइल्ड विल बी एबल टू लिव अ सक्सेसफुल लाइफ? डू यू थिंक so? So our NEP, our NCF focuses a lot and says that whatever you're teaching the child, please teach the child significance of family and community. Like for example, suppose I'm teaching the child addition. I'm teaching the child to add numbers. Can I form a human chain at that time and ask children to share one thing about their friend who is beside and develop a feeling of family and community in the class? I'm just giving you an example. Then, our NEP focuses a lot on local and Indian context. Like abhi bhi, aaj hi main dekh rahi thi, there's a circular from CBSE which says that you have to celebrate tribes of India. So why are we celebrating tribes of India? Why do you want to know about tribes of India? That is not in the curriculum. Then why do you want to know? Because we must understand this fact that these tribes
are these are our community, they are the tribes of our country, and we both gel with each other. नहीं तो आप क्लास में देखेंगे, अगर आप कभी क्लास में बच्चों की जगह भी चेंज करते हैं, उसको किसी और के बगल में बैठा देते हैं, वो दुखी हो जाता है, वो कहते हैं मैम मैं इसके बगल में नहीं बैठूंगा, सर मैं इसके बगल में नहीं बैठूंगी। हमारे अंदर टॉलरेंस बहुत कम हो गया, हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ जेल नहीं कर पा रहे हैं। हम एक बड़े कम्युनिटी में कैसे जेल करेंगे? 15 साल के बाद जब आपका बच्चा कम्युनिटी में निकलेगा, दुनिया में निकलेगा, तो वो तो सबके साथ लड़ाई कर लेगा, फोड़ देगा, राइफल चला देगा, गोली मार देगा। आजकल आप सुनते हैं ना, बात बात पे गोली मार दिया। Why this is happening? क्योंकि स्कूल लेवल पे हमने बच्चे को फैमिली, कम्युनिटी, लोकल कॉन्टेक्स्ट, इंडियन कॉन्टेक्स्ट, हमारे आसपास के लोगों के बारे में अच्छी अच्छी बातें नहीं बताई। हमने उसको नहीं बताया कि नेबर्स इंपॉर्टेंट क्यों है। Understanding. So when you are teaching in the class, friends, जब आप पढ़ा रहे हैं क्लास में, you don't need to go deviate from your content. But what you only need to do is that you have to relate whatever you're teaching in the class with the local content, with the community, with the family. Okay. So that they become good human beings when they grow up. Next is, please, Bloom's taxonomy has got a lot of focus in NEP also. NEP also strongly says, NCF strongly says that please, आप देख रहे होंगे, if you look at my PowerPoint slide, you will be able to see कि NEP says the same thing कि आप rote learning से किधर को move करो, move to competency building. So आप देखोगे, if you look at this pyramid of Bloom's taxonomy, remembering is in the last पायदान, रिमेंबरिंग सबसे नीचे है। तो फोकस रिमेंबरिंग से हटाना है और हमें ऐसे क्वेश्चंस देना है, ऐसे पढ़ाना है क्लास में, लर्निंग आउटकम्स ऐसे सेट करना है that the children are able to understand, apply, analyze, evaluate and create. And the moment you say the word create, it is the opposite of destroy, isn't it? Create is opposite of destroy. So जितना ज्यादा बच्चे को क्रिएशन सिखाओगे, उतना ही ज्यादा आपका बच्चा डिस्ट्रॉय से दूर होता जाएगा। आप अगर एक बच्चे को छोटा सा, you will ask the child to make a small moment, small model of the Taj Mahal also, small model of Qutub Minar, small model of ISRO, तो वो बच्चा कितने मेहनत से बनाएगा। और अगर आप उस बच्चे से कहें बेटा मैं इसको तोड़ दूं, the child will say no ma'am please, I will take it home ma'am. तो बच्चा क्रिएशन के वैल्यू को समझेगा। आज हमारे समाज में क्या हो रहा है, none of us are creating anything but we are ready to destroy. आप किसी की इमेज डिस्ट्रॉय कर देते हो 1 मिनट में, उसके पीठ पीछे शिकायत करके, आप किसी का लाइफ डिस्ट्रॉय कर देते हो, कोई किसी को गोली मार देता है, कोई किसी को गाली दे देता है, कोई किसी के साथ कुछ भी मिसबिहेव कर देता है, वो ये नहीं सोचता है कि अगले को क्या असर हो रहा है। कोई किसी को धक्का मार देता है तो चलो वो गिर गया, उसका हाथ टूट गया, डिस्ट्रॉय हो गया। So destruction has become predominant in our society because we have forgotten Bloom's taxonomy. We have forgotten to teach the child that you have to create. The more the child involves himself or herself into creation, the lesser the child is into destruction. So Bloom's taxonomy has got a lot of emphasis in the new education policy also. तो जब आप अपने क्लासरूम में पढ़ा रहे होते हैं, तो please try to ask questions like this. I'm showing you. There's a chart. You can take a screenshot of this. A very, very, very beautiful chart. It's not prepared by me. I've taken it up from somewhere. But a very beautiful chart. Please teach your child how to design, modify, role play, develop, rewrite, compare, contrast, criticize, reframe, judge, defend. Do you do all this in your classroom? आप सिर्फ 0-1 वाला कॉलम देखिए, आप अभी वहीं पे हैं। मोस्ट ऑफ अस, आप जब मैं आप कह रही हूँ तो मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर रही हूँ, प्लीज डोंट टेक एनी ऑफेंसेस। मैं आप कह रही हूँ मतलब मैं पूरे टीचर कम्युनिटी, हमारी थॉट प्रोसेस सबको इंक्लूड कर रही हूँ। तो हम ज्यादातर क्वेश्चंस कैसा देते हैं, डिफाइन, आइडेंटिफाई, डिस्क्राइब, रिकॉग्नाइज, टेल देते हैं ना, लेकिन हमें शिफ्ट करना है। अब आप प्लीज कोशिश करिए दैट यू शिफ्ट नंबर 2, 3, 4, 5, 6 की तरफ आपको शिफ्ट करना है। आप बच्चों को समझाइए कि किसी क्रिटिसाइज करो, डिजाइन करो। क्रिटिसाइज का मतलब चुगली करना नहीं होता, क्रिटिसाइज का मतलब होता है उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों को आप देखो और दोनों को आप समझो, ठीक है। फिर हम अपने बच्चे को सिखाएंगे कोलैबोरेट करो, ग्रुप वर्क करो, अप्रेज करो, किसी की तारीफ करो, वैल्यू करो, प्रायोरिटाइज करो। So, I would say again and again, I mean, Bloom's taxonomy as an educationist is my first love.
It's my Bible, it's my Gita, it's my Quran. So in my school also I tell my teachers कि बेटा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के ये पेज मैंने अपने टीचर्स को भी दिया है और कहा है इसका प्रिंट निकालो, और जो भी आपका बेड साइड टेबल है जहां बैठ के काम करते हो, पढ़ते हो, करेक्शन करते हो, जहां मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हो, मे बी इन योर किचन, आई डोंट नो, बट पेस्ट इट देयर. And Bloom's taxonomy, every day, every minute, every moment you should try to reiterate in your life, because NEP, NCFs are very closely linked to Bloom's taxonomy. Once you take the child to the higher levels of thinking, Bloom's taxonomy क्या सिखाता है? Bloom's taxonomy सिखाता है हमें how to think. So अगर आप अपने बच्चे को thinking सिखा दें, then I think there's nothing more the child needs. Once the child learns how to think, everything else is sorted out. Now, next, we were talking about holistic development in NEP. So, how will you help the child holistically develop? When you understand that what is my child's area of interest, what is my child's strength, then only you will help the child grow. Like for example, अगर आप अपने क्लास के 5 बच्चों को एक लाइन बना दें और ये कहे कि बेटा ये एक पेड़ है, पेड़ के सामने ले जाए, और 5 बच्चों का लाइन बना दें और आप कहें बेटा जो पेड़ पे सबसे तेज दौड़ेगा, चढ़ जाएगा, वो आज 10 आउट ऑफ 10 उसको मिलेगा. तो क्या ये पॉसिबल है कि सारे बच्चे पेड़ पे चढ़ जाएं? हो सकता है 5 में से कोई नहीं चढ़ पाए. तो क्या वो 5 बुद्धू बच्चे हैं? आपके हिसाब से उनको 0 मिलना चाहिए? या सच में अगर एक बच्चा पेड़ पे सबसे तेज चढ़ जाता है, क्या उसको 10 में 10 मिलने चाहिए, बाकी को 0? ऐसा नहीं होता है. हम सेम जजमेंट सारे बच्चों के साथ नहीं कर सकते, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा एजुकेशन सिस्टम इस वक्त ऐसा है कि वी प्रिपेयर वन क्वेश्चन पेपर फॉर द एंटायर क्लास. इन दैट क्वेश्चन पेपर वी ऐड सम क्वेश्चंस हॉट्स के नाम पर, बट दैट्स नॉट इनफ. So it is a difficult thing that we may prepare different question papers for different students. I understand that. Practically, it's not possible at the moment. लेकिन जब आप पढ़ा रहे हैं, when you are teaching in the class, can you focus on multiple intelligences? Can you focus on that? Can you help the child understand the way the child can understand easily? इंटेलिजेंस का डेफिनेशन आई होप सबको पता है. इंटेलिजेंस का डेफिनेशन ये नहीं होता कि वो मैथ्स और साइंस में कितना तेज है. इंटेलिजेंस का डेफिनेशन ये होता है कि वो कितनी आसानी से किसी चीज को सीख सकता है. दैट इज नोन एज इंटेलिजेंस. हाउ इजिली, हाउ रेडिली द चाइल्ड कैन लर्न समथिंग. तो अगर वो बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डल है, वो इंटेलिजेंट नहीं है. इसका मतलब ये है कि आप उसको उसके तरीके से नहीं सिखा पा रहे. यू आर नॉट एबल टू टीच द चाइल्ड इन हर और हिज वे. So just for your reference, teachers, you can take a screenshot of this. There are 8 types of intelligences defined. Linguistic, यानी languages, logical and mathematical, spatial मतलब आर्किटेक्ट्स वगैरह जो होते हैं जो स्पेसेस को बहुत अच्छे से समझते हैं. बॉडी काइनेस्थेटिक यानी मूवमेंट करने वाले बच्चे, डांस, थिएटर, ये सब, दौड़ा धूप, स्पोर्ट्स करने वाले बच्चे. म्यूजिकल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल एंड नेचुरलिस्ट. नेचुरलिस्ट मतलब जिनको पेड़ पौधे, फ्री जगह, गार्डन, ये सब बहुत पसंद हो. तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जाम्पल, मेरे क्लास में एक बच्चा है जो म्यूजिकल है. तो मैंने उसको एक बार समझाया, कुछ उसको नहीं समझ में आया. मैंने 2 बार समझाया, कुछ उसको नहीं समझ में आया. फिर मैंने उसको तीसरी बार गाना गाकर समझाया. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown and Jill came tumbling after. अब आपको याद आ रहा होगा कि this we do in our nursery classes, isn't it? क्यों करते हैं हम ऐसा? क्योंकि जब हम मॉन्टेसरी सिस्टम में इन सारी चीजों को फॉलो करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम फॉलो करना बंद कर देते हैं. मॉन्टेसरी सिस्टम में राइम्स इसीलिए डाला गया है बिकॉज देयर आर मेनी म्यूजिकल चिल्ड्रन इन योर क्लास. और आप देखोगे when you sing the rhymes the children understand better. But why don't you sing in class 10, 11 and 12? Because you feel ashamed. You think ये बड़े बच्चे हो गए. Absolutely wrong. Till class 12, you have to understand, not even beyond class 12. You have to understand that everybody has got a different intelligence. I may be having a very strong interpersonal intelligence. You may be having a very strong linguistic intelligence. She may be having a very strong spatial intelligence. So the teacher has to teach in that way, जिसमें मेरे बच्चे को समझ में आ जाए. So NEP advocates this very strongly. NCF tells us that you have to teach the child in his or her way. You don't have to teach the child in your way. आपने जो लेसन प्लान बनाई है ना, वो आपके लिए है, आपके समझने के लिए. उसको क्लास में इंप्लीमेंट जाकर मत कीजिए हूबहू. और नहीं तो एक ऐसा लेसन प्लान बनाइए जिसमें 40 बच्चों के लिए कुछ हो. आई होप यू हैव हर्ड अबाउट द वार्क थ्योरी, विजुअल, ऑडियो,
रीड राइट एंड काइनेस्थेटिक। यानी सारे बच्चे लेक्चर से नहीं समझते, उनको वीडियो चाहिए होता है, उनको कुछ देखना होता है। सारे बच्चे देखकर भी नहीं समझते, उनको एक्टिविटी कराइए। सारे बच्चे एक्टिविटी से भी नहीं समझते, उनको कुछ रीडिंग या राइटिंग कराइए क्लास में। देयर आर 4 मेथड्स ऑफ लर्निंग। सो with NCF, we have to understand that we have to teach the child in their way. You cannot teach the child in your way. That is very, very important. Okay. Next, my dear friends, we come to the next part of NCF, जिससे हमारे teachers will have to change their methods of teaching. Do you have to work on developing the child's skills, not rote learning? So, one way of developing skills which NEP strongly advocates is that giving vocational education for students up to classes 6 to 8, at least 10 days in a year, at least. Vocational education you have to give to your children at least 10 days in a year. Okay, students of classes 6 to 8. But otherwise, what about the children from class nursery to class 12? You have to develop their skills. So which skills you have to develop? You have to develop their 21st century skills. Now, what are 21st century skills? I've put up here. I cannot describe 21st century skills in details in this session, but you can take a screenshot of this so that you at least know that these are the 21st century skills. Now, when you're talking about 21st century skills, so क्या 21st century skills पढ़ाने के लिए अलग से टीचर होंगे क्लास में? नहीं, फिर वही बात हो गई। आप मैथ्स टीचर हैं, सोशल साइंस टीचर हैं, इंग्लिश टीचर हैं, हिंदी टीचर, आप जो भी टीचर हैं, आपको ही पढ़ाना है वो क्लासरूम में। यू हैव टू टीच दिस इन द क्लासरूम। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, आगे आप खुद पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। 21st century skills की एक बहुत अच्छी हैंडबुक भी है CBSE के, यू कैन ग्रैब अ कॉपी ऑफ दैट फ्रॉम योर स्कूल लाइब्रेरी एंड रीड दैट। फॉर एग्जाम्पल, इतने सारे 21st century skills, आप किसी भी 21st century skill को ले लो। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये एक छोटा सा लेती हूँ, कोलैबोरेशन। मुझे बच्चों में कोलैबोरेटिव स्किल्स डेवलप करने। ना व्हाट इज मीनिंग ऑफ कोलैबोरेटिव? कोलैबोरेटिव का मतलब साथ मिलकर काम करना। बच्चे, आपको पता है, दे आर वेरी पुअर इन दिस। जैसे आप टीम बनाते हो, दे स्टार्ट कंप्लेनिंग अबाउट ईच अदर, इजंट इट? So, for example, I have to develop the collaborative in the school. What can I do? Suppose I'm a maths teacher. I'm a maths teacher. I'm teaching maths in the class. I'm a social science teacher teaching a chapter in the class, and I want to develop collaborative skills also. So, what is the method? I give group work to my students. I can give questions in groups. Group A, this question. Group B, this question. Group C, this question. Group D, this question. If I want to do, suppose I want the children to recognize some historical monuments. I want the children to recognize some historians. I want the children to recognize some Raja Rani, whatever you have taught in social science, or some place. Now I call the children and I tell the children, come on children, you do dumb charades. अब dumb charade बहुत पुराना एक गेम। अगर एक टीम डम शराड्स खेल रही है और वो एक्शंस कर रही है, दूसरी टीम आइडेंटिफाई कर रही है, तो आई एम श्योर दिस टीम फीलिंग विल डेवलप एंड द चिल्ड्रन विल डेवलप कोलैबोरेटिव स्किल्स। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। तो आप अपना ही सब्जेक्ट पढ़ाओ फ्रेंड्स, मैं कभी आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाओ, आप सिर्फ यही पढ़ाओ। यू टीच योर कोर सब्जेक्ट, बट along with your core subject, you have to focus on Bloom's taxonomy, you have to focus on 21st century skills, you have to focus on the fact that you cannot give pressure to the child. You have to focus on individualized learning. You have to focus on differentiated learning. That is how your classroom teaching will change with the implementation of NEP, or I should say NCF, which is a transactional document of NEP. What is NCF? It's a transactional document of NEP. Then, NEP also says that please reduce the exam stress. Exam stress have to be reduced. So therefore, till class 2, there are no exams. Till class 8, there's no board exam. And we have board exams in 10th and 12th, but there will also be restructured so that the child doesn't feel stressed. Moreover, even in the junior classes, number of PTs have increased. You are giving grades, you're giving some marks for portfolios, you're giving some marks for periodic assessments, you're giving marks on SEAs, you're giving marks on multiple assessments. So that throughout the session you're doing a continuous and comprehensive evaluation of the child, so that at the end of the session the child doesn't feel, अरे यार मुझे तो एक एग्जाम देना है, 100 नंबर का एग्जाम है, अगर मैं एग्जाम नहीं दिया, अगर मैं अच्छा नहीं किया तो मैं फेल हो जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। Throughout the session you have to take a continuous and comprehensive evaluation of your students. Okay, next is baccalaureate. This is a very, very important aspect of NEP. That is, children have
to learn more and more through experiential learning. Experiential learning कब होगी? अगर आप उनको क्लासरूम में बैठा कर रखोगे, कॉपी किताब से ही पढ़ाओगे, तो वो क्या एक्सपीरियंस करेंगे? आप बुक में से तो निकल के अशोक नहीं आएंगे, बुक में से निकल के चाणक्य नहीं आएंगे, तो कैसे? How will the children experience? So experiential learning को promote करने के लिए, plus there are other motives also, back weight को कम करने के लिए, बच्चों को physical stress से free करने के लिए, NEP strongly talks about backless days, and that too minimum 10 backless days in a session. How many backless days? 10 backless days in a session. NEP promotes. So what is backless day? Backless day मतलब ये नहीं कि हम घूमने जाएंगे, हम चाट पकौड़ी खाएंगे, हम excursion पे चले जाएंगे. No. Backless days means my same timetable will be followed. There's no change in the timetable. But today I will be teaching without books, without notebooks, without any written work. Maybe whatever I want, I have taught to the class. Suppose I've taught adjectives and adverbs in the class. Now today I will do some activity related to adjectives and adverbs so that adjectives and adverbs are reinforced into the child. तो इसका मतलब हमारी पढ़ाई एजुकेशन सिस्टम अब चॉक एंड टॉक से बियॉन्ड चली गई है. हमारी एजुकेशन सिस्टम मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करती है, एग्जाम स्ट्रेस से फ्रीडम की बात करती है, कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात करती है, बैकलेस डे की बात करती है, हमारी वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करती है, स्किल एजुकेशन की बात करती है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की बात करती है, क्रिएशन एनालिसिस एंड कंपैरिजन की बात करती है, एंड most importantly, it is telling the teachers also that you have to teach as per the requirements of the child. The child will not study as per your method of teaching. You have to teach the child as per the requirements of the children because they are 21st century children. Okay, so if I want to sum it up, I should be saying that the new education policy aims to overhaul India's existing education regime and make it more learning centric. But the student is the center of your universe as teachers. Now the child is the center of the universe, and yet your entire world revolves around the child. Okay. Students will be provided with the best opportunity to learn research-based learning. Teachers will be given the chance to learn advanced teaching skills. To help students and make them understand the new education policies, first of all, the foremost requirement is that teachers should develop counseling and career guiding skills. So teachers, please gear up. There's a lot of learning for you. Please don't give up. Please have the courage to fight. Our entire country is going through a paradigm shift. Our entire country is going through an enormous change. So we all have to be a part of it. And tomorrow history will remember us. We were the teachers, we were the generation who has witnessed this change in the education system of India. And I will tell you my personal experience. When I'm going through the NCF, I'll find that for the first time I'm reading a document where education is core Indian education. You read the NCF, it talks about the Panchakosha, it talks about Swami Vivekananda, it talks about Mahatma Gandhi, where we were all following only foreign educationists. And today, the new NCF, the new NEP talks so much about Indian Vedas, Indian culture. You will really feel that you are going through an education system which is your own. ये आपका एजुकेशन सिस्टम है जो अपने वेस्ट से चोरी नहीं किया, जो थोड़ा बहुत फ्रांस से, थोड़ा जापान से, थोड़ा फिनलैंड से, थोड़ा अमेरिका से लिया हुआ नहीं है. ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है. उसमें सारी चीजें इतनी खूबसूरती से इंडियन कल्चर एंड इंडियन इथॉस के आसपास घूमती हैं that I'm sure, my dear friends, if you take the pain of going through the NCF, you will really enjoy. तो एनसीएफ में बहुत मुश्किल आपके लिए इसलिए नहीं है क्योंकि आप किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को पढ़ाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, या तो आप फाउंडेशनल स्टेज में होंगे, या आप मिडिल में होंगे, या प्राइमरी में होंगे, या आप सेकेंडरी. तो आप उस स्टेज का, जिस स्टेज के आप टीचर हैं, उस स्टेज के एनसीएफ को लीजिए और उसको पढ़िए. एनसीएफ आपको सब कुछ बताएगा. एनसीएफ टेल्स यू अबाउट द पेडागोजी, एनसीएफ टेल्स अबाउट मेथोडोलॉजी, एनसीएफ टॉक्स अबाउट assessment, एनसीएफ टेल्स अबाउट द aim of education, एनसीएफ टॉक्स अबाउट competencies, learning outcomes, skills, everything that you can think of. It's a ready-made document. You don't need to do anything. Only thing that you need to do is just go through it. That's it. So I think with this, I would like to put an end to it for today. If you have any doubts, if you have any questions, please feel free to ask. I'll be very happy if I can answer some of your queries. Thank you so much.
Any questions from your side? Anything you want me to discuss? Yes, and you can unmute yourself and you can ask any questions if you have got in your mind. She's wonderful sessions. She is doing many good comments. She has got Mithali ma'ams, everybody praising you. And if anybody has got any doubt or any questions in your mind, please you can ask. You can write it in the chat box also. Attendance link already been sent, and there is two conditions kept. That is 40 minutes of presence as Good well as afternoon, ma'am. and 40% of marks is a must for getting certificates. Anybody has got any questions, please you can ask. Anybody? You can unmute yourself or you can write it in the chat box. If not, Tali ma'am, it was really a wonderful session, and we like to have more sessions with you to know more about the implications of NEP in classroom teaching. And really from on behalf of entire participants, I extend my heartfelt thanks to you. And really speaking, we are it's really made it, and I think NEP is very often we need to introduce so that we can introduce it very nicely. We the teachers forget many things, but as it is a new topic and you did your job with 100% satisfaction. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. I think Thank you. no questions are arising. Everybody is writing wonderful sessions. Thank you very much. This attendance link already sent. All the participants attendance links, please click it and make your attendance along with yes question answers. 40 percentage of mark is a must for getting certificates, and 40 minutes of your presence also required. Please, all the participants, please note that attendance links number of times posted. You need to do it within 10 minutes. Please do it ASAP. Let me do the attendance link.
Those who have marked attendance, you can leave the session. 1098. No. जैसे लोग डिवाइड करते हैं ना, मल्टीप्लाई करते करेंगे तब जाएंगे तब लेके जाएंगे सर नहीं Yes. क्या बोल रहे बार बार? हर बार हो रहे तो 5-5 दिन में हो रहा है. अभी लगा दिया है, बोला तो गारंटी है जैसा भी कर रहा हम कर दिए हैं. अभी दूसरा गाड़ी है हम को अभी फ्री करके जा रहा है. ठीक है. तो चार्ज लगेगा. हम ठीक है बोला. 7 नंबर का भाई साइड वाला ऐसी काम नहीं कर रहा तो वो भी उसी से दिख रहा है. वाला का ये थोड़ा सा देखिए, हायर रेट लिया थे, थोड़ा सा देखिएगा. ठीक है, को बोल दीजिएगा. बोले हम हाँ. एक अच्छा रेट लगा दीजिएगा ना.
एसी वाला हमारा दूसरा गाड़ी और है, तो आप ही को दे देंगे। तो ये हम आप ही को दे देंगे। अभी 7 नंबर का सीट का Participants, please do the, because it's only 2-3 minutes more, it will be alive. Participants are requested do the attendance ASAP. Attendance, please link ASAP. We are going to close the session, so please do it.